in existing institutions to ensure मौजूदा availability of संस्थानों skilled में manpower मेडिकल डिवाइसेस के for उत्पादन के लिए futuristic विशेष कोर्सेज medical technologies, high-end शुरू किए manufacturing जाएंगे and research. ताकि मेडिकल डिवाइसेस Teachers चिकित्सा training. उपकरणों के क्षेत्र में हाई Teachers एंड training will ट्रेनिंग be दी जा सके। re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, टीचर्स ट्रेनिंग को continuous नए सिरे professional से development, आकार देने की dipstick कोशिश होगी। surveys and ICT implementation. The District Institute of Education Information and Communication Training Technology will का be अधिक developed इस्तेमाल as किया vibrant जाएगा। institutes of excellence for this purpose. टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को वाइब्रेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इस योजना के National तहत Digital प्रयास होगा। Library for Children and Adolescents. A national digital युवाओं library और for बच्चों के children लिए and adolescents राष्ट्रीय will be डिजिटल set up लाइब्रेरी स्थापित for की जाएगी। facilitating availability of quality books across geographies, languages, अच्छी genres, किताबों की and उपलब्धता levels, and हर device जगह हर स्तर पर हो सके accessibility. States will be और encouraged किसी to भी set up physical माध्यम पर वो libraries उपलब्ध for हो them सकें, at इसके लिए panchayat and ward ये levels डिजिटल and provide लाइब्रेरी स्थापित होंगी infrastructure और पंचायत स्तर पर भी ये उपलब्ध हो सकें, accessing the इसके लिए ढांचा national विकसित किया digital जाएगा library resources. ताकि Additionally, राष्ट्रीय डिजिटल to build a लाइब्रेरी culture of संसाधनों का इस्तेमाल किया And जा to सके। make up for pandemic time हम learning चाहते हैं loss, the कि National पढ़ने Book की जो Trust, आदत है the उसे Children's प्रोत्साहित Book किया Trust, जाए। and other sources will be encouraged नेशनल to बुक provide ट्रस्ट, and चिल्ड्रन replenish बुक ट्रस्ट non-curricular को titles प्रोत्साहित किया in जाएगा regional ताकि वो languages पाठ्यक्रम and in से English अतिरिक्त किताबों को to these क्षेत्रीय physical भाषाओं और libraries. अंग्रेजी में Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this साक्षरता के initiative. क्षेत्र में काम To करने वाले inculcate गैर सरकारी संगठनों को भी Financial literacy, काम में इस प्रयास में financial sector regulators साथ लिया and जाएगा। organizations वित्तीय will be encouraged क्षेत्र में to साक्षरता provide बढ़ाने के लिए भी कोशिश होगी। age-appropriate reading material to these libraries. और उम्र के I move to अनुसार priority 2, पठनीय पुस्तकें reaching the उपलब्ध हो last सकें, mile. इसका प्रयास होगा। Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal समाज के Affairs अंतिम व्यक्ति तक and the पहुंचने के Department प्रयास of की दिशा में Development भी of Northeast Region हम लगातार कोशिश करते रहे हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी to ने provide a sharper नॉर्थ ईस्ट focus to the मंत्रालय की स्थापना objective की of थी। reaching the last mile. Our government has formed the हमारी ministries सरकार of ने Ayush, समाज के Fisheries, अंतिम व्यक्ति Animal तक पहुंचने के Husbandry लिए and आयुष, Dairying, Skill Development, डेयरी, Jal Shakti, कौशल and विकास, जल Cooperation. शक्ति और सहकारिता जैसे मंत्रालयों की स्थापना की है। Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently Aspirational launched the जिलों को Aspirational स्थापित करने की Blocks कोशिश में program, सरकार covering ने 500 blocks for saturation of essential government 500 services ब्लॉक्स across multiple को domains एस्पिरेशनल ब्लॉक्स such में as शामिल health, किया गया है ताकि nutrition, education, वहां पर agriculture, स्वास्थ्य, water न्यूट्रिशन, resources, कृषि, financial शिक्षा, inclusion, जल skill संसाधन, development, and वित्तीय basic समावेशी infrastructure. और मूलभूत ढांचे के माननीय विकास के स्पीकर लिए सर, प्रयासों को प्रधानमंत्री आगे बढ़ाया जा सके। PVTG, प्रधानमंत्री which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission is being launched. प्रधानमंत्री प्रिमिटिव To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs समाज as के we refer कमजोर them to. जनजातीय वर्ग की मदद PVTG करने के लिए development mission will be launched. प्रधानमंत्री This पीबीटीजी will मिशन की saturate शुरुआत की गई। PVTG families and यह habitations with PVTG basic facilities परिवारों such as safe को housing, मूलभूत सुविधाएं clean drinking जैसे कि water and सुरक्षित घर, sanitation, improved साफ access पानी, to sanitation, education, health, nutrition, शिक्षा road तक and उनकी telecom पहुंच, connectivity and sustainable livelihood opportunities. An amount सड़क of संपर्क और 15,000 आजीविका के crores will be made अवसर available to और implement the 15,000 करोड़ mission in the next 3 years रुपए under the अगले 3 development साल में action इस मिशन plan के लिए for the scheduled tribes. उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि एकलव्य डायरेक्ट मॉडल इसके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स इन द नेक्स्ट एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल अगले 3 साल में 800 टीचर्स 38,300 सपोर्ट स्टाफ फॉर द शिक्षक 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स
740 एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए ट्राइबल स्टूडेंट्स 3.5 लाख ट्राइबल छात्रों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance सूखा प्रभावित of मध्य कर्नाटक के 5,300 crore इलाकों will के be अंदर given केंद्रीय to Upper Bhadra project. To अपर provide- भद्रा परियोजना के लिए to provide sustainable आर्थिक सहायता मुहैया किया जाएगी micro-irrigation and filling up ताकि of surface tanks for drinking water. सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन PM प्रोजेक्ट्स योजना को The outlay मदद for दी जा PM सके। आवास योजना is being प्रधानमंत्री enhanced आवास by योजना के लिए 66% to बजट over आवंटन 66%, 66% बढ़ाया जा रहा है। 79 Bharat 79,000 करोड़ किया जा रहा है। inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of पांडुलिपियों 1 के lakh संरक्षण के लिए ancient inscriptions in the first stage. प्राचीन ग्रंथों Support for को poor prisoners. संरक्षित करने के लिए The poor- मिशन for स्थापित poor किया जाएगा। persons- For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required जेल में financial support बंद will be provided. बेहद गरीब और कमजोर लोग जो कि बेल Priority number 3 के लिए infrastructure and आर्थिक संसाधन investment. नहीं रखते हैं, उन्हें मदद उपलब्ध Investments कराई in जाएगी। infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing कोरोना again. महामारी The के budget बाद से takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle एक of बार फिर investment निजी निवेश and job बढ़ रहा है। creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% लगातार to तीसरे 10 साल lakh crores, which हम would be पूंजीगत निवेश का आंकड़ा बढ़ा रहे हैं और अब यह आंकड़ा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। which would be 3.3% of GDP. This will almost be ये करीब 3 times the outlay 3.35% made in होगा 2019-20. भारत की जीडीपी का। This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation. यह विकास की संभावनाओं और रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा। The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure जिससे हम of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided पूंजीगत to निवेश के लिए continue the राज्यों को 50-year मदद। interest-free loan to state governments for one more year. हमने निर्णय किया है कि अगले 1 साल तक infrastructure and to incentivize them राज्य for सरकार को complementary policies actions with a significant लोन की योजना जारी की जाए of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस for more सचिवालय private investment in infrastructure, including इंफ्रास्ट्रक्चर के railways, क्षेत्र में roads, निजी urban निवेश infrastructure खासतौर and पर power, रेलवे, which are predominantly depend on public ऊर्जा, resources. The जो harmonized कि अब master तक list of सार्वजनिक infrastructure निवेश will पर be ही अधिकतर reviewed आधारित रहा by है। an expert committee for recommending the इसमें classification and financing framework एक suitable for अमृतकाल. विशेषज्ञ कमेटी A capital outlay, समीक्षा करेगी I'm talking about ताकि railways, अमृतकाल में इसमें कैसे आगे बढ़ Speaker. सकें इसका आकलन हो सके। Railways. A capital outlay Railway. of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. 2.4 लाख करोड़ का पूंजीगत बजट This is the रेलवे के लिए highest सुनिश्चित ever किया जा outlay, रहा है। above- यह रेलवे and के this- लिए अब तक sorry, का this highest ever outlay
is about 9 times the outlay made in 2013-14. यह 2013-14 में रेलवे को दिए गए बजट का 9 गुना 100 है। critical transport infrastructure projects for last and first 100 mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken खाद्यान्न, up on स्टील, priority कोयला with आदि के investment क्षेत्र of में 75,000 जो crores, 100 क्रिटिकल including 15,000 ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं crore from private उन्हें sources. चिन्हित किया गया है और इन पर 50 additional तेजी से काम airports, बढ़ाने के लिए भी heliports, water aerodromes, 50 and advanced landing एयरपोर्ट, grounds हेलीपोर्ट, will be revived for एडवांस improving लैंडिंग ग्राउंड regional air connectivity. को क्षेत्रीय वैमानिक सुविधाओं और कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कोशिश हुई है। States and cities will be encouraged to undertake urban planning. Urban planning राज्यों reforms और and खास तौर actions पर to शहरों को transform our cities इस बात into के लिए sustainable प्रोत्साहित किया cities जाएगा of कि वो अपने This means efficient वो use भविष्य of के land शहरों के resources, निर्माण के लिए adequate resources सस्टेनेबल for urban परियोजनाओं को अपनाएं। infrastructure, शहरी transit-oriented ढांचागत development, विकास के लिए enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through अर्बन लैंड property की tax उपलब्धता governance reforms and बेहतर ring हो fencing सके user इसके लिए भी charges कोशिश होंगे। on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों की साख बेहतर हो सके इसके लिए Urban infrastructure development fund प्रोत्साहित will किया be जाएगा। established through use of priority एक sector अर्बन lending इंफ्रास्ट्रक्चर shortfall. फंड This will be managed स्थापित by the किया जाएगा National Housing Bank जिससे जो and will be वित्तीय used by public सुविधाएं agencies उपलब्ध करा to सकेगा। create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. टियर States 2 will और be टियर 3 के encouraged शहरों के to अंदर leverage ढांचागत विकास resources मजबूत हो from सके the grants इसमें of the 15th वित्तीय साधन Finance इस Commission कोष के जरिए as उपलब्ध well कराए as जाएंगे। existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum. 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के All लिए cities and उपलब्ध कराने towns की will हमारी be योजना है। enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. मैनहोल से मशीन होल मोड के जरिए मशीनों के माध्यम से सीवेज Enhanced क्लीनिंग को प्रोत्साहित focus करने के लिए will be provided for हमारा विशेष scientific जोर management of dry and wet waste. Honorable ड्राई और Speaker, वेट sir, वेस्ट यानी our सूखे और Prime गीले Minister कचरे had के said, निष्पादन के लिए good governance is the key to a हम nation's इसे आगे बढ़ाना progress. चाहते हैं। Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of एक common पारदर्शी citizens. और जवाबदेह सरकार और प्रशासन को Mission सुनिश्चित करने के Karmayogi. लिए हमारी सरकार Under Mission Karmayogi, संकल्पबद्ध है। centers, states मिशन and the कर्मयोगी union के तहत territories are making and implementing केंद्र, capacity राज्य सरकार building और केंद्र plans for शासित civil servants. क्षेत्र The government has also launched an सरकारी integrated कर्मचारियों के online training क्षमता विकास platform, और I got Karmayogi, बेहतर to करने provide के लिए continuous learning प्रयासरत है और इसी opportunities दिशा में for lakhs of हमारे government सरकारी employees कर्मचारियों की क्षमता to बढ़ाने के upgrade लिए their उन्हें skills सतत and facilitate अपने people-centric कुशलता को approach. आगे बढ़ाने के अवसर मिलते रहें, यही प्रयास मिशन कर्मयोगी के तहत किया Sir, जा for रहा है। enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 करीब 39 legal कंप्लायंसेस को provisions कम have been किया गया है ताकि हम utilized. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार की सहूलियतों को बेहतर कर सकें। For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence,
for realizing the vision of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए make सेंटर ऑफ AI एक्सीलेंस in India बनाए जाएंगे and make AI ताकि work for India. AI 3 centers of excellence for भारत के लिए artificial intelligence कारगर हो सके, will be set इसके up लिए in top educational institutions. Leading industry players will partner उच्च in शिक्षण conducting संस्थानों में interdisciplinary 3 research, AI रिसर्च सेंटर develop cutting स्थापित किए जाएंगे applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health and sustainable cities. कृषि, स्वास्थ्य, This will galvanize सस्टेनेबल an effective विकास, AI खासतौर पर शहरी ecosystem विकास के लिए and AI nurture quality एक कारगर human resources मददगार in के the तौर field. पर विकसित की जा सके, इसके लिए National प्रयास data होगा। governance policy to unleash राष्ट्रीय innovation डेटा and research by startups गवर्नेंस नीति and academia, a national data governance policy स्टार्टअप will be और brought out. शिक्षण के This will enable एक access to राष्ट्रीय anonymized डेटा data. गवर्नेंस The नीति KYC process लागू will की be जाएगी। simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. डिजिटल इंडिया की जरूरतों के अनुसार केवाईसी प्रावधानों के अंदर बदलाव किए जाएंगे। A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker sir, common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. पैन को एक This will bring मूलभूत ease of आधार doing दस्तावेज के business तौर पर and it इस्तेमाल will be किया जाएगा, facilitated खास तौर पर through a legal व्यापारिक mandate. प्रतिष्ठानों के संदर्भ में। For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system एक ही of जानकारी unified सरकार की filing process will be अलग set अलग up. एजेंसी को Such दी filing जाने of वाली information जानकारियों को खत्म or करने के लिए return in एक simplified forms on a common रिटर्न portal को will be shared with other समान agencies as per the और filer's आसान तरीके choice. से फाइल करने की सुविधा दी जाएगी। विवाद से विश्वास MSMEs. In cases of failure by MSMEs एमएसएमई to क्षेत्र execute को contracts during the COVID period, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के निष्पादन में 95% of the forfeited फेलियर से amount बचाने के लिए relating to the उनका bid or performance security will be returned to them by government Performance security and government undertakings. This जब्त will की गई provide- 95% this will राशि provide relief लौटाई to जाएगी। MSMEs. यह एमएसएमई क्षेत्र को विवाद से राहत देगी। विश्वास 2 विवाद से विश्वास 2 disputes to settle contractual disputes of government and government undertakings कॉन्ट्रैक्ट के विवादों, खास तौर पर सरकार और सरकारी कंपनियों के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के विवादों को terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement उसके निपटारे के लिए terms depending एक on graded tendency settlement level system of the dispute. The state विकसित किया support जाएगा। mission of Niti Aayog will be continued नीति for आयोग 3 years for our collective efforts towards national priorities. राष्ट्रीय Result प्राथमिकताओं को based पूरा financing करने के लिए राज्यों के साथ नीति आयोग के बेहतर संवाद की व्यवस्था अगले 3 सालों तक उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। Will be changed on a pilot basis from input based to result based. E-courts for efficient administration of E-courts. justice. Phase 3 of E-courts projects will phase 3 of the E-courts project will be launched E-courts with an परियोजना के outlay of का तीसरा 7,000 चरण crores. लागू किया जाएगा। 7,000 करोड़
Fintech का services in खर्च India इसमें have होगा। been facilitated by our digital public भारत में infrastructure, वित्तीय including तकनीक Aadhaar, यानी फिनटेक की PM Jan Dhan Yojana, योजनाएं video, कई KYC, महत्वपूर्ण योजनाओं India Stack को लागू करने and में UPI. मददगार To साबित enable हुई हैं, more जिसके fintech अंदर innovative जनधन, services, the scope UPI of documents जैसी available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards DigiLocker की storing and एकीकृत sharing व्यवस्था documents online securely लागू की whenever जाएगी, needed जिसमें with various जो दस्तावेज हैं authorities, regulators, वो banks and other business विभिन्न entities. बैंक, 5G बिजनेस एंटिटी, services. सरकारी एजेंसियां 100 labs उन for दस्तावेजों developing का इस्तेमाल कर applications सकें। using 5G services will be set up 5G in सेवाएं engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport Smart systems, classroom, and healthcare applications. इंटेलिजेंट Lab-grown परिवहन सुविधा और diamonds. स्वास्थ्य Lab-grown diamonds के क्षेत्र में is a इन 5G सेवाओं technology का and इस्तेमाल कैसे हो सके, innovation-driven इसके लिए प्रयास emerging होगा। sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same लैब में properties as उत्पादित natural हीरों diamonds, के to encourage indigenous production of LGD को प्रोत्साहित करने के lab-grown लिए diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development इनको grant बढ़ावा will देने be के लिए provided to और one of the इनके IITs आयात को कम करने for के लिए 5 years. एक IIT को To 5 साल reduce के the लिए cost of इसकी तकनीक production, a विकसित करने में proposal to review the मदद दी custom जाएगी। duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for हरित life विकास or lifestyle for प्रधानमंत्री environment ने to spur a लाइफ movement मिशन of दिया, environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly पर्यावरण for के the प्रति सचेत Panchamrit, जीवन शैली the की net बात करता है। zero carbon emission by 2070 to usher in green 2070 industrial तक भारत and की economic अर्थव्यवस्था को transition. नेट This जीरो budget अर्थव्यवस्था builds बनाने on के our focus on green लिए growth. प्रयास किए जा रहे हैं और ये बजट The हमारी recently हरित launched विकास को भी National Green आगे बढ़ाने Hydrogen के प्रयासों Mission को मजबूत करता with an है। outlay of राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 19,700 crores will 19,700 facilitate transition of the economy to low करोड़ carbon intensity, का बजट reduce in dependence on आवंटन करते fossil हैं, fuel imports and make the जिसके country जरिए assume हम technology and market leadership in जीवाश्म this ईंधन sunrise के sector. आयात को कम करने Our target और is to हरित reach an ऊर्जा annual संसाधनों के production विकास में of 5 MMT आगे बढ़ सकें। by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for ऊर्जा priority capital investment towards energy transition 35,000 and करोड़ net zero objectives ऊर्जा and ट्रांजिशन के energy लिए देते हैं, security जिससे by कि हम Ministry of अपने Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage अर्थव्यवस्था को systems with capacity सतत विकास of लक्ष्यों के 4,000 प्रति आगे बढ़ाने के लिए भी हम will be लगातार supported with viability प्रयासरत gap हैं। funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program लद्दाख से ऊर्जा for encouraging behavioral और बिजली change, को a दूसरे green क्षेत्रों में credit पहुंचाया जा program will सके, be इसके notified लिए under the Environment Protection Act. विशेष
This will प्रावधान incentivize किए जाएंगे। environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम नोटिफाई किया जाएगा PM जलवायु program for संरक्षण एक्ट के restoration, तहत। awareness, nourishment, and amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched पीएम to प्रणाम incentivize योजना को states शुरू किया and जाएगा union territories जिसमें राज्यों to को promote और alternative केंद्र शासित प्रदेशों fertilizers को प्रोत्साहित and किया balanced जाएगा use of chemical fertilizers. ताकि Gobardhan scheme, रासायनिक उर्वरकों का 500 new इस्तेमाल सीमित किया जा waste to सके। wealth plants under Gobardhan, galvanizing गोवर्धन organic योजना के तहत bio agro resources done. Gobardhan scheme will be established for गोवर्धन promoting circular economy. स्कीम के तहत These सर्कुलर will include इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए 200 कोशिश की compressed जाएगी। biogas इसमें 500 plants, नए including वेस्ट टू 75 वेल्थ plants in urban प्लांट areas स्थापित किए जाएंगे and 300 community or cluster based plants at a total जिसके अंदर investment of 10,000 crores. 10,000 करोड़ की निवेश के I साथ will refer to this in ये part 500 B प्लांट also. स्थापित किए In जाएंगे। due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers भारतीय प्राकृतिक खेती बायो रिसोर्स सेंटर 1 crore farmers to adopt 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक कृषि for this honorable speaker 10,000 लागू करने स्वीकार bio करने के लिए input resource centers 10,000 बायो इनपुट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. एक बायो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड Mishti वितरण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। मिष्टी building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. Mishti will be taken for mangrove plantation along the coastline मैंग्रोव and on salt pan lands wherever प्लांटेशन बढ़ाने के लिए खासतौर पर भारत के तटीय इलाकों के अंदर मनरेगा मिष्टी योजना फंड एंड अदर सोर्सेस शुरू की जाएगी। इसके लिए कैंपा और मनरेगा के वेटलैंड्स आर फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। which sustain biological diversity. In his latest Wetland. मन की बात, the Prime Minister said, प्रधानमंत्री now, ने I quote, अपने now the total मन की number बात of कार्यक्रम के Ramsar अंदर sites in our country has increased रामसर to 75. साइट की संख्या Whereas before बढ़कर 75 हो 2014, चुकी है, There were only 26. Unquote. जबकि 2014 में इनकी संख्या केवल 24 थी। Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will स्थानीय promote आबादी the हमेशा से unique संरक्षण conservation values के लिए through Amrit Dharohar, a scheme that मजबूत will be संसाधन रही है। implemented over the next 3 years to encourage अगले optimal use of 3 सालों में wetlands and enhance wetland biodiversity, carbon और stock, ecotourism जैविक opportunities संपदा and को income generation बढ़ाने for local और साथ ही communities. पर्यटन को बढ़ावा देने, Coastal स्थानीय shipping. समुदाय को मजबूत करने के लिए Coastal shipping ये will be योजना promoted काम as करेगी। energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. लोगों और सामान की आवाजाही के Vehicle लिए replacement. कोस्टल शिपिंग को प्रोत्साहित Vehicle किया जाएगा। replacement is an important continuing policy, replacing the old political, I know, replacing, absolutely, thank you, replacing old polluting vehicles. पुराने Maybe प्रदूषण applicable, करने right? वाले वाहनों Replacing को old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In हमारी furtherance अर्थव्यवस्था of को the हरित vehicle बनाने का एक scrapping महत्वपूर्ण policy भाग है। mentioned in budget 21-22,
साल 2021-22 में लागू में घोषित की गई स्क्रैपिंग पॉलिसी में in replacing old vehicles and old state ambulances. राज्यों को भी पुराने वाहनों और खास तौर पर पुरानी एम्बुलेंसेस को रिप्लेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूथ पावर प्राथमिकता 6। Realize their dreams. We have formulated the national युवाओं को education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate नई शिक्षा नीति के तहत हमने कोशिश की कि हम युवाओं को मजबूत कर सकें प्रधानमंत्री और उनके लिए अवसरों को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 will be launched to skill प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 सालों के अंदर 6 लाख इंडस्ट्री पार्टनरशिप and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, IoT, mechatronics, IoT, drones, 3D printing, and other drone soft skills. और अन्य कौशल के अनुसार विशेष कोर्सेज चलाए जाएंगे। इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी सेट अप अक्रॉस 30 डिफरेंट स्टेट्स। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्किलिंग will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जिसमें मांग पर आधारित स्किलिंग उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप योजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा इसके माध्यम से। 3 सालों में पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम विल बी रोल्ड आउट। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत 47 लाख युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उपलब्ध होगा। will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed ऐप as a complete के माध्यम से package. टूरिस्ट अनुभव कैसा रहा ये साझा करना संभव होगा। On domestic as well as foreign tourists. स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर जोर दिया जाएगा। Sector specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of देखो अपना देश initiative. देखो अपना देश प्रयास के तहत सेक्टर आधारित पर्यटन प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयास होंगे। डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स द स्वदेश दर्शन स्कीम was also launched. स्वदेश under the vibrant villages दर्शन स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। And amenities will be facilitated in border villages. सीमा के क्षेत्र में सीमा के इलाकों के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ग्रामीण टूरिज्म योजना के तहत प्रयास किए जाएंगे। Or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district one product and GI products and एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत GI उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पादों को यूनिटी मॉल में उपलब्ध कराया जाएगा। ये यूनिटी मॉल राज्य की राजधानी या वित्तीय राजधानी या किसी प्रमुख पर्यटन स्थल पर विकसित किए जाएंगे। inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I छोटे और proposed मझोले revamping of उद्योगों के credit लिए guarantee scheme for the MSMEs.
वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना बढ़ाई जा रही है। through infusion of 9,000 crores in the corpus. 9,000 करोड़ रुपए इस कोष के अंदर जोड़े जा रहे हैं। Additional collateral free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, बिना the cost किसी of credit कोलेटरल will be के reduced by about 1%. वित्तीय साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसमें प्रयास होगा। राष्ट्रीय सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन। दिस विल फैसिलिटेट एफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वित्तीय लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क विल गवर्न दिस क्रेडिट साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। To meet the needs of Amritkaal and to facilitate अमृतकाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में नियमन को will be brought to the process of regulation सुगम बनाने के लिए and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. वित्तीय नियमन संस्थाओं से यह आग्रह किया जाएगा कि वो नियमन को अधिक सुगम और सरल बनाएं। The application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, SEZ और IFSCA के तहत एकल विंडो व्यवस्था विकसित करने का प्रयास होगा। Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks, establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing, amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. कारोबार की रीफाइनेंसिंग के लिए एक्सिम बैंक की सब्सिडियरी स्थापित की जाएगी। For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. गिफ्ट IFSC के तहत भारत विभिन्न देशों को डेटा एम्बेसी की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। Improving governance and investor protection in banking sector. To improve बैंकिंग के क्षेत्र में and enhance investors protection, certain amendments निवेशकों to the को सुरक्षा देने के लिए Regulation Act, the बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट and the Reserve बैंकिंग Bank of कंपनी India एक्ट Act are being proposed. और रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट Capacity building in में सुधार securities market. प्रस्तावित हैं। Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various सेंट्रल forms प्रोसेसिंग filed सेंटर with स्थापित field किया जाएगा। officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed निवेशकों के लिए shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund अनपेड डिविडेंड Authority और अनक्लेम्ड with शेयर ease from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital एक payments समेकित continue to IT find पोर्टल wide स्थापित किया acceptance. जाएगा। In 2022,
They show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र. आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र. आजादी का अमृत महोत्सव. आजादी का अमृत महोत्सव न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम. एक महिला सम्मान लघु बचत महिला सर्टिफिकेट. महिला सम्मान बचत सेविंग सर्टिफिकेट will be made available महिला सम्मान से बचत पत्र 2 साल के लिए मार्च 2025 तक के लिए लाया जाएगा. Deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls. एक महिला के नाम पे 2 लाख या at fixed interest लड़की के नाम पर 7.5% with 7% के ब्याज दर के साथ निवेश का अवसर होगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर मंथली इनकम अकाउंट स्कीम 4.5 से 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जा रही है प्रतिमाह. और संयुक्त खाते में 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जा रही है. 50 years वित्तीय प्रबंधन. 50 सालों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज राज्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay इसको खर्च करने का अधिकार राज्यों के प्राथमिक राज्यों के पास होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी होंगी जिसमें पुराने सरकारी वाहनों को बाहर करना, म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए above or as part of the police station, पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर घरों का निर्माण, यूनिटी मॉल का निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना. ऑनरेबल स्पीकर सर, फिस्कल डेफिसिट ऑफ states will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है. That we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path. हमने कोशिश की है कि हम
to bring घाटे the को fiscal कम करने deficit का below प्रयास करें 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the 2025-26 तक fiscal इस deficit घाटे in को 2023-24, कम करके the net हम market 4.5% borrowings तक लाना from चाहते हैं। rated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The 11.8 gross लाख market करोड़ बॉन्ड से borrowings are estimated at लेने का 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. अब मैं बजट के पार्ट बी की तरफ बढ़ना चाहूंगी। Indirect taxes. My अप्रत्यक्ष कर indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy बजट and mobility. में अप्रत्यक्ष A कर की simplified tax structure जो पूरी with अवधारणा fewer tax rates पेश helps in जो हम करने जा reducing रहे हैं compliance burden वो and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading mobility. of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt Blended excise compressed duty on natural GST gas पे paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs ग्रीन duty मोबिलिटी को बढ़ावा exemption देने के लिए is being इस पर extended to import आयात of शुल्क capital goods and machinery घटाया जा रहा required है। for manufacture of lithium ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी Electronics. के लिए As भी a result of various initiatives आयात of the शुल्क government, घटेगा। including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to मोबाइल provide फोन relief का to घरेलू उत्पादन customs बढ़ाने के लिए duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty Camera on lens lithium ion cells for के batteries for और another year. लिथियम आयन सेल के आयात में Similarly, रियायत to देने promote की योजना value है। addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to बिजली से चलने वाली 15%, and किचन that on चिमनी heat पर coils आयात for शुल्क these is proposed to be reduced from घटाने 20% to 15%. का फैसला किया है Chemicals and जिसमें petrochemicals. 20% से घटाकर उसे 15% किया जा रहा Denatured है। ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for इथाइल energy अल्कोहल पे transition. Basic customs duty आयात शुल्क is घटाया also जा being रहा है reduced जो कि on acid grade एथेनॉल fluorospar ब्लेंडिंग from ईंधन में 5% to करने को बढ़ावा देगा। 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps,
duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in part A, in cutting and polishing मरीन of उत्पादों natural के diamonds, निर्यात contributing में about 3/4 खासी of बढ़ोतरी the पिछले साल global देखने को मिली turnover है, by जिसका value. लाभ With the depletion तटीय of इलाकों में deposits रहने of वाले natural किसानों को मिला है। diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct 16% कर जो है वो सिगरेट पर बढ़ाने का प्रस्ताव है। These proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का लक्ष्य है कि लोगों को कर का से राहत मिल सके, साथ ही कंप्लायंस कम हो सके। By making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days प्रतिदिन 72 लाख रिटर्न हासिल होते हैं। 16 days only now. And 45% प्रोसेसिंग के समय को घटाकर हमने केवल 16 दिन कर दिया है। Within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. IT return form हम लाने जा रहे हैं। MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises MSME हमारे up to 2 crore of अर्थव्यवस्था का इंजन है, and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits कुछ MSME और कुछ विशेष क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर जिनकी आय 50 लाख तक हो, वो टैक्सेशन में लाभ का फायदा उठा सकते हैं। Receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sahkar Se Samriddhi, and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, सहकारिता क्षेत्र के लिए भी हम commence manufacturing activities till 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide
an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, प्राइमरी कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक में उपलब्ध होगी. cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Startup. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. For startups globally and ranks second in innovation quality among middle income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. चेंज ऑफ ओनरशिप के बावजूद लाभ जो हैं वो 7 से 10 साल तक बढ़ाए जा रहे हैं. About 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received छोटी अपील के निपटारे के लिए हम 100 जॉइंट कमिश्नर उपलब्ध कराएंगे. Targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for.
अब मैं उस विषय पे बात करना चाहती हूँ जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, व्यक्तिगत आयकर। मैं 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहती हूँ। The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. जिनकी आय 5 लाख तक है वो कोई आयकर नहीं देते हैं। मैं इसमें बढ़ोतरी करते हुए इसे 7 लाख करने का प्रस्ताव करती हूँ। आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की जा रही है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making
We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. One hour, 25 minutes. Item number 1, माननीय आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सर की आवाज. आपको बता दें, देश का बजट देश के सामने आ गया है. देश का बजट देश के सामने, और उम्मीदों पर किस हद तक ये बजट खरा उतरा है ये समझिए आप इस रूप में कि टैक्स को लेकर जो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी, उस उम्मीद के तहत यहां पर टैक्स स्लैब के अंदर बदलाव सरकार की तरफ से दिया गया है. मिडिल क्लास को राहत दी गई है. नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा. 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं. ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है. नौकरी पेशा के लिए बहुत बड़ी राहत है. टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत है. 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक की आमदनी पर 10% टैक्स. नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं. इसके अलावा 9 से 12 में 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ज्यादा आमदनी पर 30% टैक्स. साथ ही आपको बता दें, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 52,500. तो ये बड़े ऐलान जो किए गए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से. 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं. रूबिका, यहाँ पर सारे खास मेहमान बने हुए हैं जो बिल्कुल अटेंटिव होकर सुन रहे थे कि किस तरीके के यहाँ पर बजट में ऐलान हुए हैं. सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है पाया और क्या खोया? जी, बहुत कुछ पाया. कोशिश यही रही है कि सभी को सब कुछ मिले. आम आदमी का बजट रहा है, कृषि पे खास फोकस रहा है और उसको ग्रोथ इंजन की तरह देखा गया है. महिलाओं के लिए, एमएसएमईज के लिए ग्रोथ देखी गई है और बुनियादी ढांचे को और बहुत मजबूत डिजिटलाइजेशन के थ्रू किया गया है ताकि पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट किया जा सके, ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उससे इकोनॉमी आगे और बेहतर. बजट कैसा है? गुड, वेरी गुड, एवरेज, बैड? एक्सीलेंट. एक्सीलेंट, नया शब्द, एक्सीलेंट रहा बजट. केडिया जी, राहत मिली कि नहीं मिली? देखिए, जो राहत जो हम लोग सोच रहे थे वो राहत नहीं मिली, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में उन्होंने अपना भंडार पूरा खोल दिया. न्यू टैक्स रेजिम में पिछले बार हुआ क्या था, केवल 5 लाख रिटर्न जमा हो पाई थी. 7.5 करोड़ रिटर्न जमा टोटल हुई थी. उसमें केवल 5 लाख रिटर्न जो न्यू टैक्स रेजिम में जमा हो पाई थी, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए. स्टैंडर्ड डिडक्शंस, उसमें बेनिफिट नहीं मिलता था, उसको 52,500 रुपया कर दिया गया. उसके जो स्लैब्स थे, स्लैब्स को चेंज कर दिया गया और पहले 5 लाख तक जो टैक्स 87A में रिबेट 12,500 का मिलता था, उसके बाद टैक्स देने की जरूरत नहीं थी. उस इनकम को 7 लाख तक बढ़ा के कर दिया गया. कहने का मतलब 7 लाख
लाख तक का किसी की इनकम होती है तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली न्यू टैक्स रेजिम को, और उन्होंने अपने बजट स्पीच में कहा भी है कि न्यू टैक्स। चलिए साहब, हम चलते चलते जरा बात करते हैं ताकि देश को एबीपी न्यूज का बाजार भी मिल सके। आप चलिए मेरे साथ और चलते चलते आप हमें बताते चलिए कि क्या क्या मिला, क्या क्या हमने नहीं मिल पाया इस बजट में। सो न्यू टैक्स रेजिम को इन्होंने डिफॉल्ट रेजिम बना दिया। कहने का मतलब पहले क्या होता था कि ओल्ड टैक्स रेजिम डिफॉल्ट रेजिम थी और न्यू टैक्स रेजिम हम ऑप्ट करते थे तो हमें एक फॉर्म फाइल करना होता था, 10IE फॉर्म फाइल करना पड़ता था। अब इन्होंने ये कर दिया कि आप डिफॉल्ट रेजिम जो है वो न्यू वाली है। बेसिकली इनको जितने भी डिडक्शन लेस कंप्यूटेशन बनने हैं उसके तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में मेट पिछले सालों में हटा 15% जो लाया गया टैक्स रेट, उसमें सारा मेट का डिडक्शन हटा दिया गया, सारे एक्टिस के डिडक्शन हटा दिए गए। उसी तरीके से इंडिविजुअल टैक्सेशन में ये न्यू टैक्स रेजिम को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा, और 35,000 करोड़ का सरकार को इसमें नुकसान हो रहा है। तो ये काफी अच्छा चेंजेस किया है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से सोच रहे थे कि हाउसिंग लोन जो लेते हैं उसमें जो डिडक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन है उसमें बेनिफिट होगा, वो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। किसी भी तरीके का 80C में कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सरकार की मंशा साफ है कि न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा दिया जाए और ओल्ड टैक्स रेजिम को धीरे धीरे आने वाले समय में खत्म कर दिया जाएगा। रोमाना का रुख करते हैं क्योंकि वो अब आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगी कि इस बजट में आपके लिए क्या निकल कर आया है। रोमाना। बिल्कुल, देखिए, जानना आपको इस बात को होगा कि सरकार की तरफ से ये जो नया टैक्स रेजिम है इसमें बड़ी सहूलियतें दी गई हैं। ये टैक्स स्लैब जो है इसको बदला गया है, और जिस तरीके की बात अभी केडिया सर कह रहे थे कि साहब ये जो न्यू टैक्स रेजिम था इसको लेकर उत्साह टैक्स पेयर में नहीं था, तो उसी में उत्साह भरने के लिए सरकार की तरफ से ये बदलाव, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी अब प्रोविजन कर दिया गया है 52,500 रुपए का। 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रेजिम में अब सिर्फ 6 टैक्स स्लैब होंगे। सरलीकरण कर दिया गया है, उसको आसान कर दिया गया है। 6 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। और विस्तार से मैं आपको बताती हूं, 9 लाख तक की कमाई वालों को सिर्फ 45,000 टैक्स देना होगा। 9 लाख तक की कमाई पर 10% मतलब यहां पर टैक्स लग रहा है, और ये कुल बैठेगा 45,000 का टैक्स। तो 9 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना कमाई है टैक्स वाली, तो उसमें आपको 45,000 रुपए ही देना होगा। 15 लाख तक की कमाई वालों को 1.5 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। ये अलग अलग स्लैब्स, और साथ ही 15 लाख से ऊपर अगर आपकी कमाई है तो फिर 30% टैक्स ब्रैकेट वाले स्लैब में आप आएंगे। रूबिका, मैं जरा यहाँ सबसे एक एक करके रिएक्शन ले लेती हूँ। राखी, कि आपको इस बजट में क्या मिला? मुझे लगता है सोशल सिक्योरिटी पे भी, हम टैक्स की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी राहत है, अच्छी बात है। रैशनल लगा मुझे बहुत ज्यादा ये बजट। और देखिए 2-3 बड़ी बातें ये है कि 2023 में आप 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, जिसमें अंतिम व्यक्ति को सहायता, महिलाओं को, युवाओं को, डिजिटल एजुकेशन, IT, ये सब पे जोर है। बहुत बड़ी बात जो एक रूबिका नजर आई वो ये कि अब मैनहोल में इंसान नहीं जाएगा, मशीन जाएगी। बहुत एक बड़ा डेवलपमेंट है। दीप, आपको क्या मिला? देखिए, मुझे बिल्कुल ये बजट लगा है एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, जो निवेश सरकार करेगी सड़कों पर, पोर्ट्स बनाने पर, और जिससे कि जो वोटर्स है उनको दिखेगा, उसमें 33% का इजाफा किया गया है पिछले साल के मुकाबले। 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवेज को भी एक बहुत बड़ी राशि लगभग 2.5 लाख। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा है, लेकिन आपको ये चुनावी बजट लग रहा है या आपको लग रहा है ये तगड़ा बजट? नहीं, बहुत अच्छा बजट है। अर्थनीति और राजनीति के बीच में बहुत अच्छा संतुलन स्थापित किया गया है। रेवड़ी बांटने की बिल्कुल कोशिश नहीं हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ की भी कोशिश नहीं हुई है। रेवड़ी भी नहीं बटी, अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ भी नहीं हुआ। आपके लिए बजट कैसा? नहीं, निश्चित रूप से बहुत घायल जो आम आदमी है पिछले 8-10 साल से, जिसको मध्य वर्ग में बहुत बुरी हालत थी, अब की से 2014 के बाद, अब यानी कि 8 साल बाद उसको राहत मिली है। ये एक साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा है और आर्थिक रूप से भी मेरे ख्याल से मध्य वर्ग को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ किसानों का भी ध्यान रखा गया है। और वो जो, अगर आप इसे कहते हैं कि मोदी सरकार का ये साल का अंतिम बजट है, तो ये उसकी भी परिलक्षित इसमें। हाँ, रोमाना का रुख करते हैं, वो भी हमें कुछ जानकारी देना चाहती है, और यहाँ पर तमाम हर फ्रेटर्निटी का जो चेहरा मौजूद है उनसे जानेंगे कि ये बजट निर्मला सीतारमन का उन्होंने कैसे डिकोड किया। देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो बात यहाँ पर मेहमान कर रहे हैं ना कि साहब रेवड़ी बटी नहीं है, और कुल मिलाकर कोशिश सरकार की तरफ से
लेकिन ये जरूर रही है कि आम आदमी की जेब में पैसा है, और वो जेब में पैसा कैसे आएगा जब आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा। पुराना टैक्स